I've logged in from my phone now, so maybe there's some challenge with the sound system there. Okay, I think so. You join in as and when. Give me a thumbs up if you are there. If anybody is there, give me a thumbs up on that. Okay. Hello, check 1 2 3 check. अच्छा ठीक है जी आ गए. Prashant is there. Vivek Dumale is there. Good morning. Okay, ठीक है. Good. I'm back. I'm on my phone now, so I've kind of. Namaste, Vivek. चलिए good. As and when you join in. चलो ठीक है. Let me just ये हल्का सा टेक्निकल एरर आ गया and then we are. Namaste, 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 Vijay. I don't know how many of you were there in the earlier session of mine, which got disturbed or disrupted because of some voice audio challenges there. ठीक है. Okay. So I was talking about this very concept which we had a lovely audience there, and suddenly the audience disappeared. I'm so sorry for that. It's the so thank you for logging in, joining in. So give me a thumbs up if it's all clear. Vidisha, can you give me a thumbs up if it's all clear? This YouTube is a big challenge. Haji, Manish has come in, Yogesh has come in. Okay. Good to see all of you. Haji. Can I keep it here? Okay. This is better. Vidisha, can you give me a thumbs up on whether this is audible so I can move on? Hanji. This is becoming kind of a challenge for me now. Okay. ठीक है. Okay. So here, this is a challenge with, when you're alone and you're doing it and there is no support system which is there. So you're kind of struggling with the things here. Anyways, chaliye, let's go on with what I had shared earlier, that growth is not taught, it is caught. So I don't know how much of that was audible. I just went on speaking and मुझे बताया गया कि साहब audio ठीक नहीं था. So I was speaking on this concept that I'm the same in every batch, in every class, and there are hundreds and who are there to listen to me. And then there are people who catch it, there are people who don't catch it. So it all depends on how hungry you are for growth and how alert you are, how sharp you are, how keen you are. So this is one principle if you can take back home with you, that there is no class, there is no book, there is no subject, there is no teacher who can teach you growth. Yes, there will be situations where growth is hidden in various ways, in various forms. The growth is hidden there. If you're hungry for growth, you will catch it. Right? That's the first lesson. And whenever you are alert in terms of your growth, you will also experience one more beautiful thing. एक बहुत बढ़िया चीज आपके साथ होगी और वो होगी कि you will find yourself lucky. Because luck जो है ना, luck की definition क्या है? Luck की definition है कि when you're alert, you end up seeing a lot of opportunities. दोबारा बोलता हूं मैं, when you're alert, you will end up seeing a lot of opportunities. So the moment you see opportunities and your alertness is there, जब इन दोनों का मिलन होता है, the meeting of your alertness with an opportunity. तो opportunity तो बहुत है मार्केट में,
बहुत सिचुएशंस हैं जो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आ सकती है, चाहे वो बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज हो, चाहे वो रिश्तों की अपॉर्चुनिटीज हो, चाहे किसी की मदद करने की अपॉर्चुनिटीज हो, चाहे अच्छा बनने की अपॉर्चुनिटीज हो। ये मौके तो बहुत सारे हैं बाहर, लेकिन हम अलर्ट नहीं होते। और जब अलर्ट नहीं होते तो मौके जो है वो आके निकल जाते हैं या फिर कोई और उनको ग्रैब कर लेता है। तो जब हम अलर्ट होते हैं और मौके तो है बाहर, जब इनका मिलन होता है, दैट वी कॉल एज लक। या फिर आप उसका ऑपोजिट भी बोलो, मौके होते हैं और हम अलर्ट नहीं होते, उसको बोलते हैं अनलकी होना या बैड लक होना। सो पीपल ऑफ टाइम्स दे से भाग्य में था, लक में था, मैं लकी था। नहीं, लकी नहीं थे आप उस समय अलर्ट थे। एंड आई एम नॉट टेकिंग अ क्रेडिट अवे ऑफ द वर्ल्ड कि भी आई एम नॉट सेइंग यू आर गॉड कि हर चीज आपके हाथ में होगी, बट आई एम जस्ट शेयरिंग दिस विद यू दैट योर अलर्टनेस will start making you see a lot of opportunities. And the more opportunities you see, the more you will see you will end up being lucky. Because आप ग्रैब करोगे, आप कुछ करोगे, कुछ बन जाओगे, and then you will look back and you will say, यार, I was lucky that I did that. No, you were alert. Hmm? And growth hungry people, they are mostly alert. They're always on the toes. They always are on the lookout. And that is why it is said, growth is never taught, it is caught. 97 98 की 97 की बात है, and there I was in a different I just switched over to the profession of training and development. So I was not a trainer, I was not a speaker, I was an entrepreneur, and I'm still an entrepreneur. And I've shared this story many times, but just to make you aware of this fact that एक मौका आया when there was a session happening in my organization and there was no trainer there. तो सिचुएशन थी, एक अपॉर्चुनिटी थी, और मैं अलर्ट था that I should step in place of that speaker or the trainer who was not present that day. अगर मैं अलर्ट नहीं होता और मैं ग्रोथ हंग्री नहीं होता, तो मैं उस क्लास के अंदर मैं स्टेप इन नहीं करता, और मैं स्टेप इन नहीं करता उस क्लास के अंदर, तो शायद जो मैं बन रहा हूं या मैं बन गया हूं या मैं बन सकता हूं आगे जाके, वो शुरू नहीं होता, बिकॉज आई वुड हैव मिस्ड दैट अपॉर्चुनिटी. And I see that so many situations in my life. I look back, there are n number of situations जो मैंने पकड़ी क्योंकि मैं अलर्ट था. And yet I also have situations which I could not catch because शायद मैं उस समय उतना अलर्ट नहीं था. तो जब भी आप ग्रोथ हंग्री होते हो, ये द सीक्वेंस इज वेरी सिंपल. Whenever you're growth hungry, you will start, you'll become alert. And when you're alert, you will start seeing a lot of opportunities. Opportunities आप क्रिएट नहीं करते हो, अपॉर्चुनिटीज मार्केट में होती हैं, वो वहां पर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं. दुनिया हमारे लिए मौके क्रिएट करती है. That's what the world does. And I think that's the biggest contribution the world has for us. That it creates situations for us where there are opportunities hidden. अब हमारे ऊपर है कि हम कितने अलर्ट हैं. हमारी अलर्टनेस डिपेंड करती है हम कितने ग्रोथ हंग्री हैं. And if this is there in you, you will see that you will be able to grab a lot of opportunities, and then you will term yourself as lucky. Just to make it all the more simple, let's say assume करो कि आप अपने एक दोस्त के यहाँ गए हुए हो, and you had a lovely time with him in the evening, and रात को खाना आप खा के आप अपने घर के लिए निकल रहे हो, and you're booking a cab to take you back home. एंड कैब बुक नहीं हो रही है बिकॉज शायद इवनिंग का रात का ट्रैफिक बहुत है, बारिश बहुत हो रही है, आप छतरी लेके खड़े हो, आपका दोस्त आपको छोड़ के चले गया कि उसको लगा कि कैब आने वाली है, एंड यू आर स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द ऑन द साइड ऑफ द रोड इन दैट हेवी रेन, और आप सोच रहे हो कैब आएगी, कैब मिल ही नहीं रही है. एंड एज यू वेटिंग इन द रेन, एक गाड़ी आती है एंड इट स्लोज डाउन लुकिंग एट यू. वो हल्की सी स्लो डाउन करती है और आप उस गाड़ी को देखते हो अपनी छतरी से सर नीचे करके, उस उसकी खिड़की के थ्रू जहाँ पर बारिश के छींटे होते हैं, क्लियर नहीं होती है उसकी जो आदमी बैठा होता है उसकी इमेज. आपको लगता है शायद यार ये गाड़ी तो मेरे अंकल की है, क्योंकि यू नो योर अंकल्स कार, यू नो योर रिलेटिव्स कार, यू नो द कलर ऑफ द कार, बट वो स्पीड में आ रही थी और नंबर देख नहीं पाए, बारिश भी थी, और वो आपके आगे से ऐसे निकल गई और आप सोचते रह गए कि ये उनकी है कि नहीं, उनकी है कि नहीं. एनीवेज गाड़ी निकल गई आगे. आपने
कुछ देर बाद टैक्सी ली, आधा 1 घंटा वेट किया आपने, थोड़ा भीग गए पानी में, और जैसे तैसे करके आप घर पहुंचे। और जब घर पहुंचे, जैसी घर में एंट्री करी, तो देखा आपने आपके वही अंकल जिनके बारे में आप सोच रहे थे कि वो है कि नहीं, वो अंकल बैठ के चाय पी रहे। एंड द मोमेंट यू सी योर रिलेटिव, द फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव इन योर माउथ इज, अरे आप उस रोड से तो नहीं निकल रहे थे आधा घंटा 1 घंटा पहले? अंकल से, हाँ मैं तो उसी रोड से निकला। एंड द मोमेंट ही सेज मैं तो उसी रोड से निकला, आप सर पे हाथ ऐसे रखते हो और बोलते हो, अनलकी मी, मुझे लगा था कि आप होंगे। ओहो, आई विश आई हैड वेव्ड यू, आई विश आई हैड स्टॉप्ड योर कार। मुझे लगा कि आप होंगे, लेकिन माय बैड लक कि आप निकल गए और मुझे ना मैं भीग गया पानी में, आधा घंटा वेट करना पड़ा टैक्सी के लिए। आई विश आई वॉज लकी, आप ऐसा बोल देते। आई जस्ट वॉन्ट टू टेक द सिचुएशन बैक अगेन फॉर यू। इमेजिन करो, आप बाहर खड़े हो, बारिश हो रही है और एक गाड़ी आ रही है और आपको लग रहा है कि शायद ये आपके अंकल की गाड़ी है, शायद वो वहां से गुजर रहे हैं, और आपने उस अपॉर्चुनिटी को, जो थी, जो गाड़ी आ रही है, आपने अपनी अलर्टनेस से उसको हाथ दिया और रोका, और वो जैसी वो अपना गाड़ी का शीशा नीचे रोल ऑन करते हैं, एंड यू सी योर अंकल इनसाइड, एंड ही ओपन्स द डोर फॉर यू, एंड यू सिट, एंड द मोमेंट यू सिट, आपके मुंह से एक सेंटेंस निकलता है, अंकल आई एम सो लकी आई सॉ यू, मुझे टैक्सी नहीं मिल रही थी, आधा घंटा हो गया टैक्सी का वेट कर रहा हूं, आई एम सो लकी दैट आई सॉ यू। नाउ आई एम जस्ट सेइंग टू यू कि सिचुएशन जो है ना, वो सेम थी। पहले भी अंकल जा रहे थे, अभी भी अंकल जा रहे थे, पहले भी वही गाड़ी थी, अभी भी वही गाड़ी है। पहली वाली गाड़ी में आप उतने अलर्ट नहीं थे, और जब अलर्ट नहीं थे तो आपने उस गाड़ी को रुकवाया नहीं। सेकंड वाली सिचुएशन में आप अलर्ट थे और आपने उस गाड़ी को रुकवाया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अंकल ही निकलेंगे, शायद कोई और निकल जाता, वो कहता साहब मैं आज, आई डोंट नो यू, आई विल नॉट टेक यू एनीवेयर, ये भी हो सकता था। बट आई एम जस्ट सेइंग कि आपकी अलर्टनेस आपको एक मौके को पकड़ने के लिए तैयार कर देती है। यू इंक्रीज योर चांसेस ऑफ ग्रैबिंग एन अपॉर्चुनिटी जस्ट बिकॉज यू अलर्ट। और जब इन दोनों का मिलन होता है, योर अलर्टनेस एंड योर अपॉर्चुनिटी, जब इनका मिलन होता है, तो फिर आप कहते हो कि आई एम लकी। जब अपॉर्चुनिटी निकल जाती है हाथ से और आप पीछे मुड़ के देखते हो, तो आप बोलते हो आई एम अनलकी। सो आई एम जस्ट शेयरिंग दिस विद यू दैट इन लाइफ, becoming lucky or unlucky, a lot depends on us. So this is the first principle for today for all of you. So be lucky in life, and be lucky in life means be hungry for growth. And when you're hungry for growth, you'll be alert more. The second principle, which I want to share, you can give me your insights, you can give me your thumbs up, statement, questions, yes, no, whatever you want to write down, so that we know that there is some interaction happening between you and me. There is some communication, some engagement happening between you and me. The second principle, which I feel is very powerful, which has also helped me make a lot of relationships in my life. मेरे रिश्तों को बड़ा मजबूत किया है second principle ने. And this principle, let me share this with the help of a story. There was this lady by the name of Mrs. Pinto, and her husband Albert has gone to the war. And this lady, Miss Pinto, अभी मैंने ऐसे कैरेक्टर ऐसे लिए, Albert Pinto, तो so that you hang on to these names. So Mrs. Pinto is there, and Albert has gone for a long time to the war, and Mrs. Pinto is waiting for the husband's return. And every day is a day where she dreads, she feels anxious कि क्या news आएगी, what she will have to hear, and things like that. So that's a situation where Mrs. Pinto is home, Albert is on the war field, and while at home alone, Mrs. Pinto is thinking about all those wonderful times which she has had with Albert. And the memory goes back कि जब first time जो वो मिले थे, and they had gone out in the evening, and then by chance when Albert was
ऑफरिंग हर आइसक्रीम, एंड उस ऑफरिंग के में वो आइसक्रीम जो है अल्बर्ट के शर्ट पे गिर गई. एंड मिसेस पिंटो इज थिंकिंग ऑफ दैट टाइम कि जैसे वो आइसक्रीम गिरी गिरी एल्बर्ट के शर्ट पे, मिसेस पिंटो थॉट अभी एल्बर्ट गुस्सा करेगा. अरे क्या यार, आइसक्रीम भी ढंग से नहीं पकड़ सकते हो, मेरी शर्ट खराब कर दी. बट एल्बर्ट डिड नॉट गेट एंग्री. He just smiled and he cleaned his shirt. Mrs. Pinto's mind went to the time when Albert asked her out for a movie and she refused. Then I got a headache, I cannot come for a movie. And when she refused, she thought maybe Albert will get angry. But Albert did not get angry. Miss Pinto thought of the time when Albert asked her out for dinner. Let's go out for dinner. And he had come from work and he was tired, but he still wanted to go out for work. And Mrs. Pinto said, no, I got a lot of work to do at home. I cannot go out for dinner. And when she refused to go for dinner, she thought Albert would be angry. But Albert smiled and said, it's okay. There was time when they went out for a party, and Albert said, hey, let's dance. And Mrs. Pinto, she refused to dance. She said, I'm too shy. I don't want to dance in front of everybody. And she thought maybe Albert will get angry. But Albert did not get angry. And there, sitting alone, waiting for news of Albert to come, Mrs. Pinto was thinking of all those times, वो सारा समय, वो सारे moments, वो सारे पल, जब वो सोचती थी कि एल्बर्ट गुस्सा करेगा, लेकिन एल्बर्ट ने गुस्सा नहीं किया. And now she's waiting and she's thinking, एल्बर्ट तुम वापस आ जाओ. I'm willing to dance with you. I'm willing to go for a movie with you. I'm willing to go for dinner with you. I'm willing to clean your shirt. You just come back. But the way life is, Albert is long gone. He's long gone. And there is Mrs. Pinto thinking, I wish I could have done this. I wish I shouldn't have said this. I wish I could have gone ahead and did what he wanted me to do. But now he's long gone. What I want to communicate to all of you is, in relationship, and with people who are very close to you, very, very close to you, if you can just have this in mind, not from a negative perspective, but from a positive perspective, अगर आप अपने मन में ये बात रख सकते हो, then maybe it's the last time you're talking to this person. Maybe it's the last day of this person. The moment you have this thought, not from a fearful perspective, but from a reality perspective, what if it's the last day of his life? How should I talk to him? मैं कैसे बात करूं? अगर इनके जिंदगी का ये आखिरी दिन होगा तो मैं ऐसे बात करूंगा क्या? What if this person will never meet me again? Should I be behaving like this? Should I be throwing my tantrums like this? Trust me, the moment you have this in the background, your foreground will change. आपका पूरा बात करने का तरीका, वो रिश्ते को देखने का नजरिया, वो रिश्ते में खुद को डालने का एक एक आपका अप्रोच, वो सब चेंज हो जाएगा. Because actually this is a fact that one day or the other, either the person or either you, one of you will leave. दोनों में से एक ना एक को जाना ही है ना. It's a matter of time. So what are we going to be left with? We're going to be left with only the ifs and the shoulds. I should have done that. If only I could have done that. And we'll be left with only regrets. तो अगर रिश्तों को बड़ा मजबूत करना है ना, I think the simplest thing which you can hold on to and which has helped me a lot in my life, as much as possible, जो रिश्ते बड़े करीब के हैं, जो रिश्ते बड़े मायने रखते हैं, if you can treat those relationship as if it's the last day of their life. हम लोगों को जिस ढंग से बड़ा किया गया है, we have been taught, we have been told, death is a taboo. Don't talk about death. It's not good to talk about death. But this is the
This the most factual reality of our life. This is the most harsh reality of our life. And if you can have this in your mind, and इस बैकग्राउंड के साथ अगर आप फोरग्राउंड में बात करोगे कि लोग तो जा सकते हैं यार, तो मे बी आपके बात करने का तरीका, आपका उनके साथ डील करने का तरीका, उसमें बड़ा फर्क आएगा. सो डोंट बी लाइक मिसेस पिंटो, regretting now how she could have behaved or how she should have behaved with Albert when he was there. And now he is not there. अब कितना भी रिग्रेट करोगे, कितना भी अफसोस करोगे, it will not make a difference, isn't it? So let's not be Mrs. Pintos in our life. People who are close to us, people who mean the world to us. We are not God. We can't predict how long, how short their stay with us is. But at least we can predict our behavior with them. And उससे रिश्ते जो मजबूत होंगे ना आपके, उससे जो आप उन रिश्तों में कर गुजरोगे ना, आप खुद हैरान परेशान हो जाओगे कि आपने क्या कर गुजरा उसमें. So don't take people for granted. Don't. So two basic simple principles for all of you today, which I shared. If you feel that these principles made sense to you, if you feel that these principles have kind of made you more strong, made you more powerful to live your life. The first one, that growth is not taught, it is caught. Those who are alert, they will catch growth. And the second is, treat everyone around you who mean a lot to you. Treat everyone as if it's the last day of their lives. And trust me, your behavior will change significantly. आपको कुछ सीखना नहीं पड़ेगा, आपको कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, कुछ नया जानना नहीं पड़ेगा, आपके अंदर से परिवर्तन आएगा. That's how it is. That's how wonderful it is. हाँ जी. And sorry for that technical interruption which we had. And I wish that could have been avoided, but nevertheless, here I am from my iPhone, connecting again with all of you. So take these maxims home with you and make a great week for yourself. And I'll be back next week with error-free, happy minds with all of you, with my voice, video, everything audible in the best possible way. हाँ जी, चलो, ठीक है. So, any insight you would like to share, or you want to? I'm there for the next few minutes. There, I will stop speaking. I want you to speak. I want you to chat, to write down if you want to write down something. If you want me to read something, तो मैं वो पढ़ लूँगा. आप type करो. I'm there for the next few minutes. I'll be quiet. If you have been able to connect with what I said, I don't know if it's live feed which I get in YouTube or it's a delayed feed of the comments. Though the comment section is already on. Anji. हाँ जी, गणेश क्या लिखते हो तुम? हाँ जी, हाँ, ठीक है. But I don't know whether comments, I cannot read the comments here. The comments are there or not. Ganesh Borade, he says, love you Ganesh. Mahesh क्या कह रहा है? Nicely described, Mahesh. Okay, wonderful. I know I'm getting some comments. Oh, good. चलो, God bless you. महेश राठी एंड महेश विलास राव, दोनों एक के बाद एक महेश आए. बैक